Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. This is Musba Sajida and I welcome you all to my channel Talim for Everyone. In this video, we are going to see percentage can be greater than 100%. We will review this phrase statement again. And then we will have new topic expressing one quantity as a percentage of another. Then work example 3, and this all from chapter number 8 percentage, and you may find this chapter in New Syllabus Mathematics book 1, or you can say D1. So first is the phrase percentage is greater than 100% is on page number 186. Review hai ye thoda bahut. And generally we can write the percent of any value as x parts per 100, means कि x percent is defined as x parts per 100, that is x percent is equal to x upon 100. So it means that if we wish to find the 100%, so 100% means 100 divided by 100, it is equal to 1. So this is basically the amount of whole thing, the whole amount of something. So the whole amount of something is 1 or 100%. So the phrase which I want to review for you all, so it is percentage can be greater than 100%. percentage जो है वो 100% से ज़्यादा हो सकती है. So इससे related एक example की थी, एक phrase थी, this year sale is 200% of the last year. So with the help of supposition method, we have covered this example, and we can the last year means suppose the sale of a company last year was $100 million, and the sales of the company this year is $200 million. So the sales of the company this year is 200 upon 100. Unit same होने चाहिए, multiply by 100% is equal to 200% of its sale last year. Means okay, the sales of the company this year is 200% of its sale last year. Means we have expressed the sale of this year as a percentage of last year. Okay, so this statement simply means the sale this year is 2 times that of last year. Means कि इस साल की जो सेल है वो 2 times ज़्यादा है as compared to last year. तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल और पढ़ते हैं. So as I have said that the whole amount of something is called as is not called as the whole amount of something is 100%, or you can say 1. सो एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ 5 सर्कल्स आ सकते हैं. सो इट मींस दैट 100% सर्कल्स होगा. ठीक है, 100% सर्कल मीन 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 complete one. So percentage can also be less than 100%. How? Okay, of whole set of 5 circle, one is blue. मीन्स कि 5 सर्कल थे, मैंने जो है एक सर्कल को मैंने ब्लू कलर कर दिया. दिस इज दी 20% ऑफ दी होल. ये 20% सर्कल है ऑफ दी होल. तो अब बॉक्स में जो है कितने सर्कल है? ओनली वन सर्कल मीन्स 0.2 and 0.2 means 20% circle. Now percentage can also be greater than 100%. So it means that an extra circle has been added to the group. There are now 6 circles. This is 120% of the whole. Means that 0.2 is added to 1. So 0.2 plus 1 is 1.2. 1.2 divided by whole is 1. So 1.2 divided by 1 multiplied by 100% is 120%. So I hope so ये आप लोगों को concept clear हो गया होगा. How can we say that percentage is greater than or more than 100%? तो आगे चलते हैं. Expressing one quantity as a percentage of another quantity means कि एक quantity दूसरी quantity के कितने percent ज़्यादा है या कम है. So you may find that this topic on page number 188. So sometimes we are given 2 quantities. कभी-कभी हमें जो है 2 quantities दी जाती हैं and we wish to find out what percent of one quantity is of the other. like एक quantity दूसरी quantity के कितने percent है. So in other words, we wish to find how many 100 of one quantity should be taken to equal the second quantity. मतलब कि एक quantity को दूसरी quantity के हम कितना percent या कितना 100 जो है इक्वल कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी के जो है इक्वल हो जाए. मतलब कितने 100 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वांटिटी में कि जो है और मिलाए जाएं पार्ट्स के जो है वो सेकंड क्वांटिटी के इक्वल हो जाए. और
we can use percentage to see how large smaller quantity is with respect to another quantity. मतलब कि हम ये देखते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितनी परसेंट बड़ी है या छोटी है. फॉर एग्जांपल इन 2010 द टोटल पॉपुलेशन इन सिंगापुर वाज 5076,700 ऑफ विच 3230,700 वर सिंगापुरियंस. मतलब कि ये देखा गया कि टोटल पॉपुलेशन तो सिंगापुर की ये है, लेकिन out of which 3230,700 were Singaporeans. वो Singaporeans थे. How can we find that? Just or we can say that approximately 64% of the total population in Singapore were Singaporeans. मतलब कि calculation वगैरह की just by placing this value in denominator, and this one is this one is numerator and this one is denominator, means कि a upon b multiplied by 100%. So we got 64%. तो उससे हमने ये अंदाजा लगाया, ये कह सकते हैं कि 64% of the total population in Singapore is were Singaporean. So the percentage 64% is obtained by expressing the number of Singaporeans as a percentage of the total population in Singapore. Means के हमने ये देखा कि सिंगापुर में कितने में जो है 3230,700 जो है सिंगापोरियंस हैं, और टोटल जो है पॉपुलेशन कितनी है 5076,700 है. तो दिस वैल्यू we will treat as a numerator and this one is denominator. So numerator divided by denominator multiplied by 100% is equal to percentage of Singaporeans population. ठीक है, तो आगे चलते हैं. To express one quantity A as a percentage of another B, make sure that both quantities are expressed in the same unit. हमने फ्रैक्शन में जो भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं A और B, वो जो है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल की थी पीछे 200% वाली, और या फिर ये कहा जाए क्योंकि दोनों पॉपुलेशन है तो जो है हम लोगों ने फ्रैक्शन में रख, वरना जो है यूनिट सेम करना होता. तो ये सब. सो राइट द गिवन क्वांटिटी, जिसको हमने दूसरी क्वांटिटी में जो एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज, तो उसको जो है हमने न्यूमरेटर में रखना है a. Write the given quantity as a fraction of the total and multiply it by 100%. Then simplify. Required percentage is equal to a upon b multiply by 100%. Simple. So here we have example number 3, and you find this example on page number 188, and this example is related to expressing one quantity as a percentage of another. So there are 90 teachers in a school. 90 teachers हैं school में, out of which 40 are male. 40 जो है कौन है? Males हैं. Calculate the percentage of male teacher, female teacher in the school. हमें ये देखना है कि मेल टीचर कितने परसेंट हैं और फीमेल टीचर कितने परसेंट है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो परसेंटेज ऑफ द मेल टीचर इन द स्कूल इज 40 मेल्स हैं और 90 टोटल टीचर. तो 40 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 कैंसिल. 4 upon 9 multiplied by 100%. 4 multiplied by 100 is 400% हो गया, divided by 9. So 400 divided by 9. 9 4s are 36. Carry हो गया 3 हो गया 10. 10 minus 6 is 4. 3 minus 3 is 0. तो दोबारा मैं 0 कॉपी करूंगी. 9 4s are 36. आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता. सो परसेंटेज ऑफ द मेल टीचर इन दी स्कूल इज 44 होल 4 अपॉन 9%. ठीक है, ये था पार्ट 1 का आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज दैट we have to find the percentage of female teacher. तो 40 मेल है, 90 ओवरऑल टीचर है, तो 90 माइनस 40 इक्वल टू 50. तो 50 फीमेल्स हो गई. अब मुझे इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. 50 फीमेल्स हो गई. 90 minus 40 means 50 females. So percentage of female teacher in the school is 50 upon 90 multiplied by 100%. 0 to 0 cancel. 5 multiplied by 100% is 500%. So 500 divided by 9.
So 9 5 is 45. 50 minus 45 is 5. 0 copy करेंगे. 9 5 is 45. 50 minus 5 is 5. So percentage of female teacher in the school is 55 whole 5 upon 9%. देखिए second method है कि percentage of female teacher in the school, the amount of the whole amount of anything is 100%. किसी भी चीज की जो whole amount होती है वो 100% होती है. मेल की जो परसेंटेज आई है वो हमारे पास 44 होल 4 अपॉन 9 आई है. 9% आएगी तो 100% माइनस 44 होल 4 अपॉन 9% मींस 55 होल 5 अपॉन 9%. सिंपल. या तो ये वाला मेथड यूज कर लें आप लोग या फिर ये वाला मेथड यूज कर लें, टोटली अप टू यू. तो ये थी एग्जांपल नंबर 3 रिलेटेड टू दिस टॉपिक. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8A. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone. Also don't forget to hit like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइम पे मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz.